And that was a nice song which actually was starring Aishwarya and Vivek Oberoi. This film, do you know about this film, Fatrani? No. क्यों हो गया ना हाँ, that's the name of the movie. वही हो गया इसकी लाइफ के साथ. क्यों हो गया ना, बस हो गया, तुम्हारा खत्म भी हो गया बॉस. Poor thing, right? I really feel sorry for the guy, dude. So. Yeah, I don't think he was a bad actor. That's what everybody says, that he. Well, let me. I actually kind of agree with you. He was not a bad actor, but not a very interesting actor also. Well, I don't know. Anyway, not a very interesting looking actor, so that's another thing. Oh, that also is there, huh? Yeah, that's also How there. could you do all these things, man? लेकिन वो तो ज़रूर है डेफिनेटली कि हमारे विवेक ओबरॉय जी ने भाई से पंगा ले लिया, क्योंकि एक्चुअली मुझे लगता है जब लड़की बीच में आती है ना, कोई भी में से ऐसे ही प्रॉब्लम हो जाता है कि अभी देखो रणबीर और सलमान के बीच वो ना फिर से. लेकिन ऐश्वर्या राय कुछ कम नहीं है. हाँ, she's also had she says that, oh, he was suspecting me of having relationship with everybody. How did she, when Abhishek Bachchan was supposed to be going very strong with Rani Mukherjee, suddenly these two announced that they're getting married? That's true. They actually met at temple, no? Yeah. Huh? Well, that way you can also say that partly is the fault of Abhishek Bachchan also. Okay. Yeah, that guy also is not a saint, by the way. Who? Abhishek Bachchan. Yeah. Why? Of course. Yeah, that's true actually. We'll talk about the bad boys of Bollywood later on, Balisha. Yeah, exactly. And we'll also talk about we'll talk about Bad Boy Badmaas probably later on, but Bad Boys Bollywood summertime we'll do a show. We'll talk about all the Bollywood ke so-called kya bade baap ki beede bete. Literally how it is, right? That we'll talk about that for sure. Well, the main reason that this okay, so Aishwarya Rai supposedly broke up with Vivek Oberoi because of the public spat he had with Salman Khan. And that was actually brought up by her only. Yeah, it was brought on by her only. Yeah. Because apparently when those two started dating, the tiff which started off just as a cold war, they were not talking to each other, and then it went on to become something very serious over the years. In 2003, ये विवेक ओबरॉय जी ने, जैसे आलतू ने बोला, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और बोला कि सल्लू भाई से 41 कॉल्स आए गाली देते हुए and threatening to kill him over his closeness with Aishwarya, blah 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 and all that. So this हमारे भाई के साथ ठीक नहीं बैठा. Exactly. And the lady love used that as an excuse to break up with him also. Well, she got a better prospect with Abhishek, but she's keeping options open, by the way. Yeah, definitely. Excuse me, how? What? It's true, dude. Definitely. Yeah. Because Bachchan Khandan, right? So, Exactly. Yeah, and there was nobody in the Kapoor Khandan who was old enough for her. So, obviously. So, anyway. But Bhai doesn't seem to be very forgiving. Even today, Vivek Oberoi, who was supposedly touted as the chocolate boy of Bollywood, even by his friends in the industry started to disown him. Oh, that's true. Because they were also Salman's friends. Yeah. So they chose between him and Salman Khan. Is what people say. What kind of friends are those, man? Seriously, friends सुलह करा देते हैं. It's not the friends who actually break things up. यहाँ पे friends सुलह कर देते हैं. Anyway, so just wanted to let you know, Badijan, that that was today we're talking about the popular tiffs of the Tinsel Town. Yeah. And जो कभी कभार होता है कि कुछ absolutely insignificant चीजों से शुरू होती है. Yeah. या कुछ एक्टरों से पूछो तो ये लिखी जाती है कि oh, this person had this disagreement with that person and this happened like this and that and all that stuff, but really there would be nothing to it. And you will see the actors are acting like as if, what the heck are they talking about? We have not even talked about any of this. We'll come to those because a lot of these happen that way. People don't even know what's happening with the, with many of situations. Right. Yeah, and कभी-कभार ये बस अखवा होता है. हाँ, exactly. And it is just that our media trying to make the best out of every situation. हाँ, and आजकल सोशल मीडिया पे आप देखोगे ना कितने सारे लोग ऐसे ही करते हैं, मतलब खुंदस में आके पता है क्या लोगों क्या गाली देते हैं without even thinking twice. They'll write all kinds of nonsensical गालीज की उसके माँ बहन बाप सभी की गाली देते हैं. My goodness, I'm like so shocked, and this is over somebody like an insignificant nothing.
who wants to rule for the rest of his life, this Yeah. country. Mhm. Over that, people go and fight. कि जैसे वो अपना मामा है या चाचा है या पापा है या दादा है. Yeah. You know, people fight like that over something as silly as that. Sitting here, really, on Twitter and on Facebook, how far will that fight go? That's true. Right now, Baja, what we're going to do is we're going to go into one more song break for you guys. We're going to come into our health issue segment. Yes, and it's very important, Manja, because BP बहुत लोगों की चढ़ रही है आजकल. हाँ, ये टिप्स ऐसे करेंगे तो उनका वैसे भी चढ़ रहा है ना बीपी, तो we'll have to see how we can actually mitigate that or whatever. Correct. तो बलजन इससे पहले एक छोटा सा गाना हो जाए फतड़ी. हाँ ठीक है. हाँ देखो फालतू सपोज टू लैंड ऑफ द सॉन्ग बोले हाँ ठीक है ढूंढ रही है अभी. जब तक ये ढूंढे आपको बोलते कि दिस इज द पैम पैम शो. ऑफ कोर्स आज वी आर डूइंग द टिप्स इन टाउन टिप्स ट्यूसडेज जहाँ पे वी टॉकिंग अबाउट ऑल द अनवांटेड टिप्स व्हिच एक्चुअली वेंट ब्लोन अप आउट ऑफ प्रोपोर्शन एंड पीपल एक्चुअली टॉकिंग अबाउट इट. मेनी पीपल लूजिंग द करियर्स ऑन बेस्ड ऑन दैट आल्सो बलजन. एंड वी विल come to more of the stories for sure. Like Ravi, let's go into a segment which is called Health 360, where we're going to have Prerna Uppal, who's a nutritionist and a dietitian, coming on air with us and talking to us about how we have to make sure we keep our health in check, and how the recent study is coming about what all we eat, right? What we consider to be healthy. Is it healthy at all in the first place? Because she's going to discuss about a UC Davis study which talked about the purity and quality of avocado oils sold in the US. Right? And she's going to talk about that. We'll discuss a little bit about cooking oils, and we'll talk about how we can actually, what are the studies and what are the findings about these cooking oils, and what's the best thing to do for us, especially being a first South Asian diet, right? So, Faltani, हाँ. what do you have for us? Here you go. Salman Khan and Aishwarya Rai, who still don't talk to each other. Yeah, really? They don't? That's what I heard. Oh. From their, oh my god, oh so popular movie, Hum Dil De Chuke Sanam. So mean. The main hero actually over here is Devgan. And Really? Devgan's not talked about at all. Really? Yeah. I thought Salman and Aishwarya's love affair is what is the big deal, no? No, the big deal is actually she going back to Devgan afterwards, right? Oh. Oh my god. You didn't know that. तुम्हें देखती है जो बात कहना चाहे जुबान तुमसे ये वो कहती है. आँखों की शर्मो हया छुपती है. तो सुनाया ना बदुजान ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग है. सुना कि काफी रोमांटिक कपल भी थे, लेकिन उन दोनों के बीच क्या क्या हो गया, एक झगड़े ने क्या क्या कर दिया लाइफ Hi, में. hi, 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 hi. तो इसीलिए उनको ऐसे बीपी को चेक में रखना चाहिए था. नमक ज्यादा नहीं खाना चाहिए था, करेक्ट ऑयल को खाना चाहिए था. Say like right now they're very much they're very careful about what they eat and what they don't eat. Yes, absolutely. And they're supposed to be one of the most conscious, health conscious people in Bollywood. Oh really? Nice. Yeah, Salman Khan is supposed to be one of the most health conscious people in Bollywood. तो बंदजान अभी हम लोग जा रहे हैं. If you haven't already figured out with that lead in that I was trying to do with regard to oils and namak and all that stuff, we are going into a segment with Prerna Uppal from the Palo Alto Medical Foundation, the Sata Health Group. She's coming on right now to talk to us a little bit about what kind of foods and what kind of oils, cooking oils we should be using.
आपको अगर questions है तो all you need to do is call into the studio 408-912-2479. Again, 408-912-2479 is the number for you to call into the studio and ask Prerna ji a question. So let's go on and welcome her. Hi Prerna ji, how are you? I'm well, thank you. How are you guys? We're doing good. Thank you for asking. I was curious. I know that the topic that you've picked today is about oils, and I saw that you reference UC Davis study about the purity and quality of avocado oil. Could you share a little bit more about that, Prerna ji, so that one would think that avocado oil is very good, right, for cooking? Exactly. So, in our practice, Dr. Sinha and I recommend to our patients what kind of, sometimes we go into brand names and just guide them as to what choices they should make. And, I decided to revisit this topic. I know that Dr. Ron has written an extensive blog post on what's the best cooking oil. And I think it was written last December. So the Bandhus can definitely read that. But the reason I brought up this topic today is because the first extensive study of some commercial avocado oil was done at UC Davis in the summer of 2020. And it was very interesting. It was done by the food science experts at the university. And what they found was that 82% of the samples of olive oil that they tested were either stale before the expiration date listed on the bottle, or they were mixed with other oils. Wow. Okay. And in terms of being mixed with other oils, 3 of the samples did not have any avocado oil even in there, even though the label said avocado oil. They contained soybean oil, 100% soybean oil. Oh, wow. So it was a very, very shocking sort of piece of research, and it got my attention because, we've been telling patients to have more monounsaturated fats in their diet. And as we know, avocado oil is a monounsaturated fat, and we do recommend it. But now I have to do a whole different kind of education with my patients on picking the right avocado oil and being sort of just a little more aware of the source. And right up, of course, if you have any questions regarding this, give us a call here for sure, and we'll be happy to take your calls. The lines are open for you guys to call in over here. 408-912-2479 408-912-2479. We have with us on air Prerna Uppal, who actually is a dietitian, nutritionist, and also a yoga practitioner. Banajan, she also dabbles into Ayurveda and stuff like that. But if you want to get more information on how you can get your life back on the healthy track, I think the best person to contact would be her. And you can also reach out through our Facebook page, or you can also go to Sutter Health and actually reach out to her through the Sutter Health program page as well, which is, of course, is it sutterhealth.org, Faldwani? Yes, absolutely. Actually, you can go to Sutter Health Punjan, or you can go to the page pamf.org/South Asian, pamf.org/South Asian. So, Prerna ji, what I wanted to ask you was, you said that there was you found, the study found that the avocado oil was mixed with other ingredients. Now, how does that affect or translate to when you use it as a cooking oil? Suppose there have been people have been using that. How does that affect your overall, your physiology or your body composition? How does that affect you? Yeah, it's a great question. One is that, like I mentioned, avocado oil we recommend because of its fatty acid profile. It's a healthy fat with monounsaturated fats. It also has a lot of vitamin E, so it's nutrient dense. And that's an oil that we recommend, just like we do with olive oil. Now, keep in mind that olive oil has a higher smoking point, and I'll sort of discuss that in just a bit. But when you mix in other low quality oils which don't have a high smoke point,
you're not getting the benefit that you're paying for, right? All avocado oil is expensive. People are paying a hefty amount to get this oil. Huh. And if you're going to get actually a product that's labeled avocado oil but contains soybean oil, which they found in 3 of the products, Uh-huh. not only is the smoke point going to be lower, which means that the oil is going to start producing free radicals and sort of becoming unhealthy. Uh-huh. And you don't think that's going to happen because you've been told that avocado oil is the best one to use for high temperature cooking. Right. Mm-hmm. Right. Right. So I do want to ask you this question. So now it kind of seems it's very difficult for us to actually trust anybody for that. Capitalists, the agenda is to make money and cut corners and all this stuff. I do remember once you talked about how you could make, ghee at home. Now, how pure could that be, and how easy is that, and can you give us some tips as to how we can navigate this particular problem? We think avocados oil is avocado oil the end all, or is it like the only way of getting healthy, fats into ours? Can you talk a little bit about that, please? Yeah, great question. As you said, it's hard to trust what's out there, right? Right. Because, in 2015, there was the National Consumers League had tested 11 different olive oils, and they found that 6 of them failed to meet the standards Wow. Wow. that classify them as extra virgin. So we've had this happen before with olive oil. Now we're running into an issue with avocado oil. So that brings me to answer your question, what should we be doing, and what do you do about ghee? So yes, it's easy to make ghee at home, but I want our bandhus to realize that ghee is a saturated fat, so it's not as healthy as a monounsaturated fat. And much as saturated fats have been given a bad name, and we realize that they may not be bad for everyone, keep in mind that our South Asian bandhus who have a very high propensity for insulin resistance, if they're eating a lot of carbohydrates, refined carbohydrates, and they add saturated fat to their diet, that's a very unhealthy and dangerous combination. Okay. Also, saturated fat sometimes can raise a person's low density lipoprotein, which is your bad cholesterol, and your total cholesterol. So one has to really sort of know whether you are fat sensitive or not. Wow. Okay. So you can't sort of across the board say that they're okay for you. Now, Ayurveda does say that ghee is very healthy. So I think in small proportions, if you use good quality ghee, by that I mean organic grass-fed ghee in small quantities, it definitely would have some healthful benefits, but you've got to make sure you don't have the high LDL and insulin resistance to be able to include these other oils or saturated So I fat. think a follow-up question to what I asked you, Prerna, is like how we try to make ghee at home. Is it possible to make this avocado or olive oil at home? Is it like too laborious a process? I don't know. I'm just asking you. Yeah, that's a great question actually, because when you look at what olive oil is, it's just pressed olives, right? And when you look at what's avocado oil, they mash the pulp, and that's how they extract the oil. But it's not something that we can do at home. It really has to be manufactured. Okay. However, with some of the oils, so that's where you come into, are you using cold pressed oils versus refined oils? Because when heat is used to extract these oils, you actually are losing some of these antioxidants and health benefits, Oh, okay. right? Oh. So you want to get unrefined, organic if possible, cold pressed varieties whenever you can. Okay. Yeah, but better to use monounsaturated fats of high quality in small amounts versus large amounts of saturated fat. So this is a very, very dumb question. And I'm going to say that I'm speaking from personal experience here. I used to wonder, I didn't know what the cold pressed actually meant. And I'm like, ki farak penda? Because you're actually going to put the tadka and you're going to Make it boil hot that again. anyway. So does that matter? Because you're actually, whether you use cold pressed extra virgin olive oil or you're using it avocado oil, if you're using it for the chonk or you're using it for the tadka, then how does that matter is the question. And is there something that we should watch out for, that it shouldn't be heated beyond a certain point?
Yeah, so that's a great question, actually. Yeah. The thing with cold pressed is that you don't lose the nutrients at the source when they're making the oil. Uh-huh. It's very important for our bandhus to know that how we store the oil is very important to keeping it fresh and keeping the nutrients intact. Mm-hmm. So you store them in a dark place away from light. And you buy small quantities so that you don't keep them sitting for too long where they get rancid. Mm-hmm. Yes, so cold press retains most of the nutrients. In terms of do we lose that when we heat it? So that's where the smoke point comes in. If you're going to heat an oil which has a low smoking point and you see it starts to smoke, that's when you're losing the nutrients in the oil. Mm-hmm. Okay. Okay. Yeah. So, like, in Indian cooking, we do a lot of tadka, for instance. Right. So you want to use a high smoke point oil for the tadka, which is why if you look at it, our ancestors used to use a little bit of ghee, right? Because Right. it has a high smoke point. Right. But again, you got to just look at your health profile before you do But that. after you told us about the ghee part of it, I use ghee in all my cooking, Prerna. It tastes good and I also feel good that I'm making it nice and healthy. I think so. Your advice is to make sure we get cold pressed. But then anything, how do we navigate this particular problem? The study you talked about, getting the stale thing and everything. So, are there any brands you would? I don't know if you would actually do endorse it, but any rule of thumb to follow when you're buying these oils in the store? Yes, so usually we don't go into brands, Yeah. but in this case, I do want to share that with our bandhus because it's in the report, so it's not something that I am putting out. Yeah. They found that there were two brands that actually met their sort of requirements for purity and just the health quality. And one of them was Chosen Foods. So I usually buy that at Costco, but you can buy it at other supermarkets. And then there was another one called Marianne's avocado oil. So these two actually met the requirements of the study, and as they were looking for something that was of high quality and pure. Right. And of course, Banjan, this is Prerna Upal, who is a nutritionist and a wellness coach with the Sutter Health Group. She works very closely with Dr. Ronnie Sinha, and also is somebody that you can reach out to at the Palo Alto Medical Foundation, which is now part of the Sutter Health Group, pamf.org/South Asian, to schedule an appointment to meet with Prerna or with Dr. Sinha. You can also send questions for Prerna via Dr. Sinha's blog. There, like Prerna mentioned, there is a detailed blog post that he had done with regard to what is the best cooking oil to use. And this is on southasianhealthsolution.org. You can actually write to them over there. So, Prerna, thank you so much for coming on and bringing valuable information We for our might have- bandhus. Yet again, we might have a bandhu who has a question for you. We're going to try to see if we can get them on. Would you mind holding the line so that we can see if they have a question for you? Sure. Hi, welcome to Health 360 on Pam Pam. Did you have a question for Prerna Upal? Yes, I do. Yes, go ahead, sir. Hi, Prerna. I don't know if you have already answered this question, but as you mentioned in one of the studies, they found some brands which had, like said, they have avocado oil in the label, but there was no avocado oil at all in the compound. So how do we make sure we are getting the right thing? I mean, if the label is misleading, how else we can make sure we are getting the right thing? If you have already answered that, that's okay. I can give the recap. Yeah, I think she did cover, but you want to quickly That's address a that? good question. And to answer your question, that's really something that now the food companies need to be monitored, and we need to have stricter quality control guidelines because obviously they're just putting stuff on there that's inaccurate. So for now, if you are using avocado oil, stick with the two brands that I mentioned because they did test out clean.
and that is Chosen Foods and Marianne's avocado oil. I know there's some really good quality ones even at Trader Joe's, and I do trust that brand. So, you have some to choose from. But I think this needs to be addressed at a higher level. We need to have more transparency from these food companies. It would be hard for us to know. Right, especially given everything that's going on with the CDC, the FDA, and everything right now, Badhujan. Yeah, So everything it's is very alive. hard. Everything is up in the air. But yeah, like if you have I think it was Vishal Arora ji who called, right? Yeah. So if you have further questions, I would definitely urge you to get in touch with Prerna ji or with Dr. Ranesh Sinha by going to southasianhealthsolution.org. Thank you, Prerna, yet again. We look forward to learning more from you in a couple of weeks. In the meanwhile, have a healthy, happy, safe rest of the 2 weeks. You too. Thanks. Thank you. That was Health 360 today, Badhujan, and we were talking about avocado oils, and we were talking about whether avocado oils are good for you or are they bad for you. Certain brands are supposedly coming out with some contaminants, which is basically other oils that have been mixed in, and it's not the best for your system. No. So if you've been using avocado oil and you feel that your numbers have been going up and not really doing well, then you might want to take a look at what are the actual ingredients or get it tested, or for that matter, just go with a more recognized brand that Prerna just talked about. I think Marianne's, and then what was the other one? Chosen something, right? Chosen something. Chosen Foods or something like that. So we will share that with you on our Facebook page. But if you want to go and get more information about this, go to southasianhealthsolution.org. Tinseltown Tips will continue on the Pam Pam Show right after this. एक आंसू और एक फालतू दोनों है मस्त इस तरह एक आंसू और एक फालतू दोनों है मस्त इस तरह और जो पैम पैम में हो रहा है ये तो होना ही था एक आंसू और एक फालतू दोनों है मस्त इस तरह एक आलतू और एक फालतू दोनों है मस्त इस तरह और जो पैम पैम में हो रहा है ये तो होना ही था हर एक दिन सुनते हैं यार शाम को छोड़ के अपने सारे काम धाम को टीम है जुदा जुदा गानों बातों में मजा पोस्ट है कि वारे वाह बोलो 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 एक आलतू और एक फालतू दोनों ही मस्त इस तरह ओ एक आलतू और एक फालतू दोनों ही मस्त इस तरह और जो पैम पैम में हो रहा है ये तो होना ही था कहानियाँ सुना के आपको लुभाएंगे पहेलियाँ सब आपकी बुझाएंगे
फालतू ज्ञान इस तरफ कॉमन सेंस उस तरफ छोटा जाए किस तरफ बुलु 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 बुलु। एक आलतू और एक फालतू दोनों है मस्त इस तरह। हाँ, एक आलतू और एक फालतू दोनों है मस्त इस तरह। और जो पैम पैम में हो रहा है ये तो होना ही था। कही कहावतें हैं ये काम की है सुनी हिदायतें हैं आपके आराम की। ओ पैम पैम के भरम भूल गए खुद को हम ऐसा है ये कार्यक्रम। सुनो 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 सुनो। एक आलतू और एक फालतू दोनों है मस्त इस तरह। एक आलतू और एक फालतू दोनों है मस्त इस तरह। और जो पैम पैम में हो रहा है ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। You are listening to Radio D Hotties, powered by Mahima Creations. The views and opinions expressed by the hosts, guests, or callers of this show do not necessarily reflect those of the staff or management of Radio D Hotties. The content broadcast on this show is meant for informational and entertainment purposes only. Radio D Hotties, the best and hottest Indian radio network in the entire world. Mahima Creations. Proudly present Premier Evening Drive Time Show. Bam Bam! Yes, you heard it right. Bam Bam! Every Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Let's beat the traffic. Bam Bam! Bye-bye. Namaskar, namaskar, namaste, namaskara, vanakkam, khushamadid, assalamu alaikum, sat sri akal, beekandariki vandanamu, jai Swami Narayan, jai Shri Krishna, jai Janindra, and of course हमारे सारे इस्माइली भाई बंधु बोलेंगे या अली मदद एंड मुराली मदद बंधुजन। हम आ गए हैं आपके प्यारे महिमा के द्वारा। मैं से फालतू बाबा एंड फालतू नहीं थोड़ी देर में हमारे साथ शामिल हो जाएगी बंधुजन। जब आएगी तो बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन फिलहाल आपको बोल दें कि आज क्या चल रहा है। आज हमारे शो पे वे टॉकिंग अबाउट टिल्सन टाउन टिप्स बंधुजन। यस यस, विशाल जी ने बोला चलते चलते शो पे चेंज कर दिया नाम। हाँ वाई नॉट, जब हो सकता है तो कर देते हैं हम लोग, राइट। तो हाँ, तो कर दिया चेंज, टिल्सन टाउन टिप्स ट्यूसडे बंधुजन, जहाँ पे भी एक्चुअली आर talking about how Indian cinema superstars, not only superstars, they also have super egos. And super egos that comes with all kinds of, super misunderstandings and super, I should say, quarrels. Misunderstanding is what leads to those quarrels and everything, Banajan. And many a times, though, even if it's a small thing, our media always makes it a big deal out of it, and they try to create story out of something which is not even there, right? हवा दे के और थोड़ा कर देते हैं. Now, similarly, in the previous hour, we talked a lot about Aishwarya Rai and her tiff, not her tiff, actually, Salman Khan's thing with Taka, which got broken off with Aishwarya Rai, and then the little bit of a spat they had, which made a lot of news after the fact that they were roaring, they were the most popular couple in the industry at that time. And then we had Aishwarya Rai, who bounced into the arms of Vivek Oberoi, and then Vivek Oberoi and Salman Khan going head on, and then Vivek Oberoi taking the hit, Balajan. All this thing we talked about just now. But the thing is, Salman Khan is not a person who is free of controversy. You know, he always is there in the news. Something other will be there. Maybe the court case, which actually he coolly walked away from, or whatever, and or for the matter, the things he does in the industry to establish his power, he still gets away with things, right? So,
Khan, jab dekhte hain na, we talk about the Khandom, right? The Khandom is like, you know, the three Khans we have right now. They actually are ruling the pretty much the industry, is what they say, right? Salman Khan, Shah Rukh Khan, and Amir Khan. Now, in तीनों में भी कुछ ना कुछ चलता रहता है. One of the things that actually came up was Salman Khan and Shah Rukh Khan, who actually had a tiff some time ago, and this tiff was actually, again, source of tiff was what? Shah Rukh Khan supporting Aishwarya, I suppose, and it went into a spiral thing, and then for some time, these two actors who were Karan Arjun, right, they stopped doing projects together. Now, why? What happened? We don't know. Probably we'll wait for our father to come back and share some more information. But the only time we saw them back to the same screen was, again, as a cameo only, not as anything else, but as a cameo was in this particular movie called Zero of Shah Rukh Khan. But abhi to, of course, everybody says, like, you know, Gale Milta is because Eid ke liye and everything, they actually are very good friends, is what they say right now. But there was a time when the media was going crazy behind the stories of their fight and rivalry between the fans of Shah Rukh Khan and fans of Salman Khan. लेकिन ये गाने से लगता है कि दोनों अच्छे दोस्त हैं भाई. Well, good for you guys. But ये गाना सुनो, come back. This is for the movie Zero. मधुआ पी के प्रेम का हम है तनिक बोराए से रब्बो मसू का यार हम है बीच ना कोई आए रे उसके नैना नीट दारू से गजब चढ़ जाए रे तब से हमरी है वो जब से जग में आशिक आए रे कसम से धर्म से कसम से जिगरा चकना चूर है इश्क बाजी से. अरे ये गाना सुनो, लेकिन एक चीज बोलता हूँ बड़जान, एक ऐसा सुपरस्टार है जिसने बोला था अपने कुत्ते को शाहरुख खान नाम दिया था उसने. कौन था ये? कॉल कीजिएगा 408-912-2477. Became a big media news wherein this particular superstar tweeted saying that he named his dog Shah Rukh Khan, and then Shah Rukh Khan replied with a nice, reply as usual, what he does very politically, saying that he lost 2 of his fans, and that was his 2 kids, right? So कौन था ये star who actually went ahead and went public and said that he named his dog Shah Rukh Khan? कौन है ये? कॉल कीजिएगा 408-912-2479. And what is the beef there? What is the beef? जानो प्रीत की चिड़िया कौन गगन में उड़ती है. प्रीत हमारी परछाई है जहाँ मुड़े हम मुड़ती है. लग जाइए है तेज कटारी बड़ी जोर से सीने में. दर्द बड़ा हो तभी तो आवे बड़ा मजा भी जीने में. उसका हमरा मेल अनोखा, उसका हमरा मेल अनोखा, वो लहर हम पानी है. तुम हो पानी हम किनारा, लहर हम तक आनी है. कसम से जिगरा चकना चूर है इश्क बानी से. And of course, बजार क्वेश्चन मैंने पूछा था कि कौन था वो स्टार सुपरस्टार जिसने एक्चुअली अपने कुत्ते का नाम शाहरुख खान रखा. तो मालूम फालतू नहीं? मुझे मालूम है. हाँ, लेकिन बंधु से पूछा ना. बंधु, गिव अस अ कॉल हियर, लेट मी नो हु इट वाज. अगर आपको मालूम है तो कॉल कीजिएगा 4089122479 पे. तब तक यहाँ पे ये गाना सुन लीजिएगा फ्रॉम द मूवी, ये जो फिल्म है ना, which has Shah Rukh Khan in it, but of course Salman Khan does a cameo, right? Allows his own girlfriend to act also as a heroine. Oh really? हम मुझसे प्रेम गजब कर दे, वो हमसे प्रेम गजब करती, वो हमरे लिए जरूरी है, वो हमरे बिना अधूरी है. हम तो से उसको लड़वाएंगे ना हम भड़काएंगे. तू चमचा हो जा उसका जो है मानेगी ना बात. वो 1/2 आशिक तोहरी कैसे होगी छोरी रे. अपने कद से ऊंचा ना तू सपनों का चरखा काट. करते हैं क्यों बातें
बच्चन देखा इसमें ना दे एक्चुअली सेंड मैसेज आल्सो गाने में या क्या मैसेज मालूम है कि मिला हमसे हाथ नहीं रे बाबा वो भी सच वो ठीक है यस आई एग्री विद यू उससे पहले ना व्हाट इज हैपनिंग इज ही एक्चुअली ट्राइंग फॉर हिज गर्लफ्रेंड ही इज टेलिंग दैट यू नो शाहरुख खान द कैरेक्टर जीरो व्हाट्स द गाइस नेम इन द मूवी जीरो his name is very interesting nice name Banta no something like that something like that but the guy he's trying to impress Katrina Kaif in the movie with Salman Khan's coming and saying no she's my girlfriend yeah Katrina Kaif is it isn't it Anushka Sharma Katrina Kaif Oh, Katrina Kaif is that the movie she's also there yes let's go to waiting namaskar aap khaane hote pam pam ke Tinseltown tips mein who's this hi Pam Pam. pam pam कैसा है सर बहुत दिनों के बाद I know मैं बिल्कुल ठीक हूँ बहुत दिनों के बाद. अच्छा बाद में एक चीज है मैं हाँ आपको आप हमारा शो सुन रहे हैं इसलिए आप ठीक है बट बाद में एक पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट है फालतू नहीं हाँ. कोई तो हमारा ये जो फोन का बारे में कमेंट मारा है कि मैंने उसका फोन रख दिया है हाँ. नहीं विशाल जी आपका फोन कभी रखते नहीं है ऐसे टाइम चला था वी हैड टू बी ट्रांजिशनिंग इनटू द टॉप ऑफ द आवर सो वी हैड टू एक्चुअली क्लोज आवर थिंग दैट्स व्हाई वी गॉट कट अदरवाइज कॉल कीजिएगा विशाल जी भाई इतना क्यों करते देखो हाँ काट खेला दिया सब भी कॉल कर दिया हाँ काट दिया गलती से मिस्टेक हो गया यार because we were trying to trans फर्गी भी फालतू नहीं हाँ क्या मैंने नहीं किया तुमने किया अच्छा मैंने किया था हाँ. अच्छा मैं देखो देख खेला साहब देखो क्या मेरे पे डाल दिया पूरा उसने हाँ ओके फाइन कोई बात नहीं. कोई बात नहीं लेते हम लोग हम लोग ऐसे वेरी रिस्पांसिबल पीपल हैं हम लोग एनीथिंग गोइंग रॉन्ग आई एम रिस्पांसिबल Yeah, एनीवेज that's true. आप खेड़ा साहब ये बताओ ना ये कौन सुपरस्टार था जिसने एक्चुअली अपने कुत्ते का नाम शाहरुख खान रखा KKR. केकेआर कौन KKR कौन है पता नहीं कौन सा खाना बिग बॉस में भी आया था ये. नो 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 ओह दैट 2 rupees fellow Something like that. हाँ नहीं वो नहीं एक रियली सुपरस्टार एक्चुअल सुपरस्टार जो काफी लोगों को भाते हैं उन्होंने अपना कुत्ते का नाम शाहरुख खान रखा बोल ट्वीट भी किया था उन्होंने हाँ एक बार ऑलमोस्ट डेकेड अगो उन्होंने एक ट्वीट मारा था कि शाहरुख इज लिकिंग माय शूज एंड आई एम फीडिंग हिम बिस्किट्स या ऐसे कुछ ऐसे ट्वीट किया था या तो बाद में उन्होंने क्लैरिफाई किया था कि शाहरुख उनके कुत्ते का नाम है एंड बाय द वे उन्होंने कभी भी दोनों ने किसी भी सिचुएशन में स्क्रीन शेयर नहीं किया है रियली हिट दिस इज अ ट्रिविया फॉर यू रियली दे नेवर शेयर्ड नेवर शेयर स्क्रीन टुगेदर ओह वाओ ये जो दोनों हीरो हैं ये कौन है आप बताइए मैं नहीं बता सकता मुझे नहीं मालूम. ओह माय गॉड क्यों क्या थोड़ा और दिमाग पे जोर डालो सर ये जो आपसे मैं बात कर रहा हूँ ना ये दिमाग पे पूरा जोर डाल के ही बात कर रहा हूँ इससे ज्यादा जोर नहीं डलेगा. अच्छा क्यों इतना लगता है क्या आप दिल से नहीं कॉल करते हो क्या वाह क्या डायलॉग बात बताओ इसी बात पे दांत तेरे को वो डाल दिया आपने वेरी गुड हाँ बट सर एक्चुअली सोचो किसके साथ अगर मैं कहूँ कि मैं लिवर से बात कर रहा हूँ तो हाँ मान लेंगे हम लोग सर हम इतने भोले हैं सर मान लेते हैं आपको इतना प्यार करते हैं आपको तो हम मान लेते हैं जब भी आप बोले हाँ हाँ क्या बोलते हो सही है ना बिल्कुल ठीक बोलता हूँ. ठीक बोल रहे हो. हाँ. यार दोनों तरफ से होता है. सर आप ये बताओ ना एक ऐसा हीरो के साथ शाहरुख खान ने कभी काम नहीं किया ये बदले में काम नहीं किया शाहरुख खान के साथ हाँ नेवर एनी मूवी फॉर द मैटर दे नेवर डन टुगेदर हाँ एक कैमियो भी नहीं लेकिन दोनों आए हैं काफी सारे अवार्ड शोज में और हाँ. आपकी अदालत वाले शो में दोनों आए थे यस दोनों से जहाँ पे पूछा गया ड्रामा वामा की क्या था हाँ, कि हाँ. सब ठीक है कि नहीं हाँ. दोनों ईद में गले मिलते हैं सब कुछ करते हैं हाँ लेकिन एक के पास कुत्ता है जिसका नाम शाहरुख खान है कौन है और शाहरुख खान भी ताना मारते हैं कभी कभार उनके परफेक्शनिज्म के बारे में बोर लेकिन आपको हेल्प चाहिए तो बोलो से आमिर पूछो खान, अच्छा आमिर खान। अच्छा आर यू श्योर बिकॉज़ एक बंदो आए हैं हेल्प करने के लिए आपको नहीं आमिर खान बोल दिया आपने हाँ चलो वेरी गुड ओके करेक्ट सर आपने सही से पहचाना आपने सही से पहचाना। इट इज आमिर खान एंड शाहरुख खान पता नहीं उन दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम है लेकिन दोनों एक अरे ईगो पर दोनों एक ही हाइट के हैं इसीलिए क्या बस यही नहीं है दोनों मतलब कुछ ना कुछ दे कीप टेकिंग पॉट शॉट्स एट ईच अदर हाँ कुछ क्या तो रहेगा यार। हाँ कुछ तो भी है लेकिन बोलते हैं कि बहुत सही अच्छे है ना दोस्त हैं। एक तीनों खानों में से एक का शादी नहीं हुआ एक का तो शादी होके फिर से 2-3 बार किया उसने शादी करके और एक तो स्टडी है मतलब एक ओनली पर्सन स्टडी शाहरुख खान Yeah. नवंबर बॉर्न पीपल आर कमिटेड यार अच्छा पर थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन खेड़ा साहब सुनते रहिएगा ओके
Thank you, ji. Thank you very Thank much. you. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन एंड जो कॉल कर रहे थे वापस कॉल करिएगा बिकॉज बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं यार हमारे अभी ये जो शाहरुख खान साहब का हम बात कर रहे थे इनके साथ जो लफड़ा हुआ था आमिर खान साहब के साथ क्या था वो एक्चुअली? पता नहीं वो क्या था एग्जैक्टली लेकिन यू नो देती जब पीके की जो मोशन पोस्टर रिलीज हुई थी तब शाहरुख खान ने कुछ और ऐसे ही ताना मार के कोई ट्वीट किया होगा। था उसके बारे में कुछ यू नो लेकिन शाहरुख खान की जो ये होती है राइट मतलब क्लाउड नहीं क्लाउड्स नहीं द वे ही यू नो टिपिकल स्कॉर्पियन डंक मारना होता है मतलब यू नो इट्स Oh. लाइक रैप्ड इन शुगर एंड फटक से You won't even realize. शुगर में रैप के फटक देते के फालतू नहीं? हाँ. Actually वो ब्लैकेट में ना you wet your hand and hit somebody is way more powerful. Well, Yeah. he kind of sort of he'll say something and he'll let it the way he lets it sink in, right? Is like, oh my God. Yeah. Well, What is actually, that Shah Rukh Khan actually takes offense of many things. In fact, he took offense even in Aishwarya, if you remember right. What happened? You know, एक फिल्म आई थी चलते चलते राइट? चलते चलते में कौन था मालूम है? रानी मुखर्जी। अभिषेक बच्चन का देन का गर्लफ्रेंड हाँ, रानी मुखर्जी and शाहरुख खान. शाहरुख खान था ना पहले हाँ. उसके लिए it was actually Aishwarya Rai. Oh wow. Yeah, but Salman Khan actually, Shah Rukh Khan actually was not happy with the way Salman Khan used to just follow her in the Oh. sets, I believe. Really? Yeah, so he replaced Aishwarya Rai totally. He replaced. He replaced Aishwarya Rai, no. Because if you notice, Aishwarya and Shah Rukh Khan never done any movie as hero-heroine. But of course, in one particular movie they are done as a hero, but this is Chalte Chalte supposedly a movie where they were done together. Really? Yeah. Wow, I Yeah. had no idea. Well, there you go. That's a little bit of information for everybody out there. Tinseltown trash talk, मतलब Tinseltown आज का tiff talk है. I'm talking about the tiffs in the industry, but जन हमारे बॉलीवुड के बहुत सारे ऐसे बड़े-बड़े लोग हैं जिनके बड़े-बड़े ईगो भी है, and उसके बारे में बात करेंगे. अरे, not only the gents, even the females have the same kind of problems. Yes, yes, yes. Do you want to name a few of them? No, I'm not going to name a few of them. I'm just going to give you an example. Okay. These are two supposedly really hot actresses. Okay. One of them is the typical light skinned, you know, light eyed, gorgeous beauty, so to speak. And the other one is dusky complexioned and sort of, you know, one of those. You know, buxom heroines of Buxom Bollywood. heroine. She went and she got some Buxom done. implants and all that stuff done, and she supposedly ये पहले ये बताओ दोनों तो- नाम ही है क्या? Are they famous, both of them? हाँ, एक तो अभी एक्टिंग कुछ नहीं करती है, मतलब किसी और के शोहर को अपना शोहर बना के Oh ये हो my गई. God, really? हाँ, she basically got married to this this other guy, and who was already married, broke up his marriage, Oh, shoot. and then she got married to him. Let me guess. But wait. Hmm. So this heroine whom I'm talking about, who's she's still very popular. Okay. One of them is very, very popular. Yeah. And she supposedly was somebody who is supposedly the Mufat of the industry, so to speak. Oh, really? So she makes comments about everybody's you know, fashion sense when she herself was not so great in terms of her fashion sense. Only now her fashion sense supposedly has improved. Mm-hmm. So she called the other heroine Kali Billi. No. Yeah, and she said that these two acted in a movie together. They did? They did. They acted in a movie together, and in that, after that movie, she basically said that she was the Kali Billi, and she also went to the extent of saying that at that time that heroine's boyfriend was somebody who's a muscle man of the Indian film industry, and she said that guy has no expression on his face, and that time the fight began. Oh. That he's an expressionless तूने actor. मेरे मर्द के बारे में ऐसे कैसे बोला? हाँ, ऐसा कुछ तो भी. Oh my God. लेकिन वो बंदे से Cat fight, huh? इसका हाँ टोटल कैट Hey, फाइट था. I'm not sure. I don't know how many of us actually follow cat fights. हाँ, You do, right? I don't. I don't follow. It just is there because this particular actress, Badhuja, by the way, let us tell you, this particular actress has met Altu Baba also. Altu Baba also has met this actress, and I don't know what he said, whether he found her so good looking that he, you know, that he was tongue tied. I don't couldn't know. help it. I was IFA or FIFA. Yeah, FIFA. FIFA or IFA. को IFA बना दिया मैंने इसने. IFA या FIFA बना दिया actually. Football को ये कर दिया. But actually I was thinking of something else. That's why I told her that thing on Yeah, stage. But yeah. But she's very nice and sweet to me. Yeah, so basically she supposedly told this actress, when she was asked whether she will work with the other actress who called her a Kali Billi, she said no.
Never tell you. ever am I going to act with this actress again. She said, you either get along with some people or you don't. Oh, and I wow. don't get along with I her. tell you, मैं उसमें बहुत जिगर में आ गया. एंड देन इसका रेस्पॉन्स वो दूसरी एक्ट्रेस ने बोला कि उसको सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, आपने खुद के टैलेंट पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं है. Oh my God! ऐसे बोल दिया. इतना सब कुछ हो गया. I'll tell you one thing. And she says in a 4-page interview, she spoke about me for 3 pages. So think about her confidence. ये ना I'll tell you बड़े बाप की बिगड़ी बेटी है ये. हाँ, वही है. exactly. And दूसरी वाली तो of course उसके जिगर में बहुत आगे by the way. कौन थे ये? Who are these two heroines who actually had this quarrel and actually went on public? हाँ, जनरली हम लोग काफी सारे टेंसिल टाउन ट्रैश टॉक करना बंद कर दिया हमने काफी दिनों से. We should bring it back further. It'll be interesting topic for me to learn about all these things. I'm pretty sure Deepa Jorapura will know this answer. Oh really? But she should call ना. Yeah. Anyway, आराम सोच के कॉल कीजिएगा. बजे तक हम लोग एक शाहरुख खान नहीं, आमिर खान का गाना लगाएंगे. शाहरुख खान समाकार हो गया, लेकिन ये जगह आपके लिए पेश है ये गाना. आमिर खान, the short man and tall man of industry legend, लंबू जी के साथ में टिंगू जी. A new take on लंबू जी, टिंगू जी. But we are asking you about the Gori Billi Kali Billi story. Who Yeah. are these two actresses who went at each other's after acting in a particular movie? 408-912-2479. आपको Hello. कॉल करना है. Hi, नमस्कार. Who's this? सुनीता सुनीता जी कैसे हैं आप? पैम पैम. बढ़िया. पैम पैम, कैसे Very हैं good. आप? First class सुनीता जी, कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? अपने घर से फोन कर रही हूँ. अरे वाह वाह. वाह. अब ये ना बोलना कि घर आपका चांद पे. घर चांद से भी आ गए. चांद से भी आ गया. अरे वेरी गुड. लेकिन सीता जी आपका ना, आप कौन से एरिया से कॉल कर रहे हैं बताओ, ये बताओ. कुपटिनो. एंड यू फर्स्ट टाइम कॉल टू आवर शो? पहली बार कॉल कर रहे हो? ऐसा फर्स्ट टाइम. यस आप. ये बताइए आप हमें कब से सुन रहे हैं? वेल आते जाते सुनती रहती हूँ. पूरा इतना 1 घंटे का अगर वक्त निकल जाए तो जरूर बैठ के पूरा दिन सुनूंगी. लेकिन कहते हैं जैसे खिड़की का झरोका खोल के देखते रहते हैं, ऐसे खोल के देखते रहते हैं. वाह, झांक के सुन रहे हैं. Very good. But thank you so much for doing that actually, and it's so nice to hear you call in today and say hello to us. हाँ. तो ये बताइए, हम जो आज we're doing the Tinseltown tips. हाँ. And ये जो trash talk था between two meows, that is Kali Billi and Gori Billi. I think this is a Kareena calling Bipasha Basu. Are you sure? Bipasha Basu she called Kali Billi? Yeah. Falsani, really? Really? Kareena Kapoor called Bipasha Basu Kali Billi? अरे इसीलिए तो बोला. Yeah. तू काली बिल्ली से मिला था ना, इसीलिए बोला. What? Excuse me, she was so fair. सही है क्या? हाँ, सही है? you're 100%, exactly. Sunita, you're 100% right. We'll give it to you Okay. because you're right about this. How do you know? Did you लेकिन know about? आपको कैसे मालूम? हाँ, how do you know this? ये जो होती है ना इंडिया की मैगजीन्स के हाँ, लोग tabloids. पढ़ते रहते हैं. तो Yes, yes. बहुत साल पहले एक काली बिल्ली का ये पढ़ा था. उस टाइम पे बिपाशा बासु के बहुत अच्छे गाने चलते थे, तो दिमाग में उसके न्यूज ज्यादा पढ़े जाते थे. जब पढ़ा था वो कितनी कुछ चीजें छप जाती है काली Correct, बिल्ली. correct. So No, but actually you're right. No, I really think I take offense to Kareena Kapoor on this one. Yeah. Kareena Kapoor, she already a privileged personality. Yeah. And the way she should not have been saying that. Anyway, whatever her response, Bipasha's response, no matter how, it was okay. It was nice. I Right. think. Yeah, I mean she handled it with a grace. Yeah, ये yeah. कहते हैं कि कहने वाले को फर्क नहीं पड़ता, जो कहता है ना Yeah. उसका ज्यादा होता है. जो रिसीव करता है वो उसको कैसे हैंडल करता है उसमें ग्रेसनेस दिखाई देती है ना. Correct. हाँ, correct. इसीलिए मैं सबको Yeah. बोलता हूँ, मुझे कितना चाहे आप ऐसे बुलाओ, मैं रिसीव कर लेता हूँ. I am very graceful that way. बिल्कुल सही कहा आपने. Yeah, मैं बहुत graceful accept कर लेता हूँ. हाँ, तू बहुत ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लेता है. देख हाँ, तू हाँ. रोज नहीं, मैं आप तो दोनों ही बहुत ग्रेसफुल हैं. Don't worry. एक बाउंसर दोनों तरफ चलता है, एक तरफ नहीं चलता. so sweet of you. Thank you. Thank you सुनीता जी, आपने तो हमारा लाइफ बना दिया. आप कॉल करके ऐसे ही कॉल करते रहेगा, जितना हो सके झांकते रहेगा खिड़की से. हाँ, तेरा फर्स्ट टाइम कॉल. प्रॉब्लम ये होती है जब फोन पे सुन रही होती है उसी फोन से भी कॉल करूंगी तो सुन नहीं सकती ना सर. हाँ, ऐसा बात है आपका. ओके. लेकिन सुनीता, I want to ask you a question if you don't mind. अगर आप जी, I'm going to ask a very personal question to you, okay? ये बताओ कि हमारे शो से आप इतना प्यार क्यों करते हो? Why do you love our show so much? Please, honestly बताओ. Well, honestly दिल से बताती हूँ. हाँ. एक शो होते हैं जो आप सुन रहे होते हो और आपको पता है कि जो नेक्स्ट गाना आएगा चलता रहेगा राइट. और एक शो ऐसा होते हैं जहाँ आप ऐसा फील करते हो कि बात सुन रहे हो तो लग रहा है कि दिल खुश हो रहा है राइट. इंसान दिल से बातें कर रहा है. तो इस तरह की दिल खोल मस्ती, दिल खोल टॉक जहाँ
दिमाग दिल से जब इंसान दिमाग से सोच के बात करता है ना तो बहुत फिल्टर्ड हो जाती है। आपकी बातें सुन के लगता है आप लोग दिल से बातें कर रहे हो। दिमाग का नाम कुछ नहीं है हमारे पास। दिल की बातों का कनेक्शन दिल से जरूर कभी सोचना नहीं पड़ता, वो लग जाता है। So so sweet. sweet. Thank you You know, so much. she's such a sweet person. See, she actually told nice things about us. Correct. And please tell something nice about her also. She'll feel Eh, better. about ये us. बना- अब दोनों के बारे में बोला। दोनों के बारे में फाइन ठीक है। हाँ, झगड़ा क्यों thank- करते हैं फालतू आदमी? हाँ, तू हमेशा अपने लिए स्कोप ले लेता है आलतू मैंने बाबा। नहीं ये मैं सुनीता जी कॉल किया है, उनके साथ मेरे लिए झगड़ा मत कर तू फालतू आदमी। मैं उनके साथ थोड़ी ना कर रही हूँ। उनके सामने अच्छा। उनके साथ थोड़ी करती तू, मेरे साथ करती है झगड़ा, राइट? हाँ, देखो पीठ पीछे तो सभी करते हैं, सामने करने वाले के लिए जिगर चाहिए ना। हाँ जिगर चाहिए फालतू आदमी, हाँ, please. एग्जैक्टली हाँ। करेक्ट। जिगर चाहिए। वो बोल रही है मेरे को जिगर है। तो मारती क्यों है? हाँ। My God. अच्छा सुनीता जी थैंक यू सो मच कॉलिंग अस, आपके लिए Okay, स्पेशल thank कॉल you. लगा देंगे हम लोग, ओके? ठीक है, थैंक यू सो Thank मच। you so Absolutely. much. Okay, take care. थैंक यू सो मच। एंड ऑफ कोर्स बच्चन आपको यहाँ पे कॉल करने का नंबर है 4089122479। क्या बोल रही है फालतू आदमी? तो ये जो काली बिल्ली है ना, सॉरी बिपाशा, How mean. How mean. मैं गोरी बिल्ली काली बिल्ली बोलने वाली थी। हेलो। हाँ गोरी बिल्ली काली बिल्ली का फाइट हुआ था बोरी बिल्ली में। That is funny. बोरी बिल्ली नहीं होता, वो बोरी बिल्ली बोरी बिल्ली में हुआ था। हाँ। Oh my God. हाँ, हाँ तो- क्या बोल रही थी तो वो दोनों एक मूवी में एक्ट किए थे, अजनबी करके। राइट? I don't कसम know. से तेरी आंखें ई, हैया रे हैया। नहीं नहीं अच्छा कसम से तेरी बातें ऐसे हैया रे घटिया गाना हैया। लगाने के लिए बैठा नहीं हूँ यहाँ पे। कसम से तेरा नजर चुराना But I'll tell you हैया one रे thing, हैया। if Salman Khan is one person who takes tips for everybody, right? हाँ। ये करीना कपूर कम नहीं है। क्यों? करीना कपूर के एक से बढ़कर एक चाहिए है। She actually had a tiff film with Priyanka Chopra. Really? Did you know why? Why? There was a movie called Aitraz, you remember? Aetraz, no, I don't remember. I've not seen it. Okay, Aitraz में supposedly, what's the name? Kareena Kapoor is there in Aitraz? I think so. But the movie was Akshay Kumar and the thing, Akshay Kumar main hero. हाँ, even in Ajnabi, Akshay Kumar is the main hero. हाँ देखा उसमें प्रियंका चोपड़ा took all the accolades because उसको जलन हो गई थी किसको? करीना करीना कपूर को. हे भगवान। And guess what? I think she has a complex also against people who are dusky. Why? Yeah. Who was the- Kareena oh. Kapoor, Priyanka Chopra also has dark complexion compared to her, right? हाँ. And guess what? One more thing. हाँ. Kareena Kapoor also हाँ. had a fight हाँ. with you know who? Who, man? Kaho Na Pyare heroine. They didn't actually have a fight. It's just been a Cold War. It was a Cold War because Why? Because there was supposed to be introduction of Kareena Kapoor with Hrithik Roshan, but Correct. Amisha Patel got the role. right. Just because of that professional rivalry. Wait, My wait, God, seriously, professional rivalry nahi. Hold on. It's also the fact that Kareena Kapoor went and said that she doesn't want to do the movie because she didn't think that it was like a movie that she needed to do. Huh, but after the thing again, after the movie became hit, she was like, That I she agree wa- with Amisha I Patel. said no. That is the thing, right? She said I said no to She- that role, and she- that's how she got the role. Oh my What the heck? God. Anyway, just to wash out all those kind of thoughts, but we'll come back with more questions for you guys. But right now, let's listen to a nice song, Fadwani. I don't want to play a song which you talked about. Nah, no My interest. man. Okay, we'll come back and play some song Kareena Kapoor, okay? But right now, listen to the song. No? No? Yeah? Okay. Okay? Okay. A nice song, but enjoy. हाल से मलंगी है चाल से फिरंगी शैतान की लुगाई रात है इसकी अदा में कोहनूर का जमाल है शौकीन है मिजाज से मियाँ कमाल है अंगूर के निचोड़ में नहा के आई है मौके का फायदा उठा ले बेमिसाल है And of course, बच्चन ये गाना बजेगा बैकग्राउंड में अमिताभ भट्टाचार्य के लिरिक्स है, अजय अतुल के म्यूजिक है बच्चन. लेकिन फातवानी एक और चीज है. अभी तक हमने मेल फीमेल की बात की, राइट? एक मेल फीमेल की एक झगड़ा हुआ था जहाँ पे एक पूरा फिल्म का एकदम सत्यानाश हो गया. फिल्म का सत्यानाश हो गया. फिल्म का सत्यानाश हो गया. हीरो और डायरेक्टर के बीच में आग लगी. अरे बाप हाँ, रे. फिल्म लिया 4 साल करने के लिए. हाँ, पहला तो सब लवी लवी हुआ था. मतलब अफेयर चाहता जाके लिव इन रिलेशनशिप हुआ था. हाँ. बाद में यहाँ तक कि इवन सलूमिया सेड ओके टू रिलेशनशिप आल्सो. Well, Salmiya didn't have a choice. But still, he said okay to relationship. He did not say anything. But उसके ओके या ना हो किसी क्या फर्क पड़ता है? अरे बहुत फर्क पड़ता है भाई. अजीत नहीं, जी से पूछो. But this particular couple कौन है भाई? ये कौन? हीरो हीरोइन कौन है? हाँ, इन दोनों के बीच इतना झगड़ा हो गया बंधुजान. ब्रेकअप के बाद हीरोइन चली गई वापस सलमान खान के कैंप में. अच्छा. हाँ हाँ. हाँ हाँ. हाँ, कौन है हीरो हीरोइन जिनका टाका बड़ा था लेकिन ऐसे ही भिड़ गए आफ्टरवर्ड्स, राइट? एंड एक फिल्म भी फ्लॉप हो गया थैंक्स टू देम एंड देयर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डेट्स.
they actually gave a hard time Yeah, to the director. to the director, and then they blamed it all on the director. Yeah, poor But the guy. movie is actually a very well thought out movie. Yeah, well done also actually. I like Yeah. that. आता ना हो फिर भी गाएं Who's the couple who had this tiff तो क्या in Tinseltown? ताल तो क्या On Tinseltown Tips Tuesdays. चूक On Pam Pam. With your Altu Baba. And Faltu Faltu Rani. Rani. पहले ही सलाम On Radio D Hotties. Call on. की तो 408 912 2479. जो मार दी देखो जमीन पे होश गिर पड़ा धड़ाम है दंग मचे शोर मचे हल्ले जब तक न ढले रात जश्न कर ले थिरक 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 झूम ले वशमल्ले 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 यारा वशमल्ले दंग मचे शोर मचे हल्ले जब तक न ढले रात जश्न कर ले थिरक 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 झूम ले वशमल्ले 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 यारा वशमल्ले क्या बदजान मालूम नहीं हो रहा है कौन थे ये दो. Well, how about you play a nice song of the couple Faltu Rani before the fights? कॉल करने का ऐसे ऑनलाइन सिर्फ लिखने का नहीं. जो भी देखा आलतू बाबा, हाँ. हमारे जो बंधु हैं विशाल अरोड़ा जी, क्योंकि तूने फोन पटक दिया था वो वापस कॉल नहीं कर रहे हैं. अरे यार प्लीज डोंट मेक इट अ Tinseltown tiff again. देखो आई एम Yeah, लाइक शाहरुख Tinsel- खान, आई एम टेलिंग यू, सलमान खान. अरे चलो यार ईद गले मिलते हैं, चलो आ जाओ. ओह माय गॉड. कम ऑन, थूक दो यार, किस्सा थूक दो. आ जाओ कॉल करो, अब बात करेंगे फिर से हम लोग, है ना, कनेक्शन कर लेते हैं, वरना मैं कॉल कर दूंगा आपको. हाँ. विशाल जी आ जाओ. नमस्कार, आप खाने से पैम पैम में मैं हूँ. call कर हेलो, हाय, कौन है भाई? हेलो पैम पैम, पैम पैम. आपने कॉल किया है. जब फोन किया तो डरना क्या, जब फोन किया. हेलो कौन है जी? ऑल राइट, लगता है मेरा कोई ब्लैंक कॉल रहेगा, तो लव यू टू. शर्म नहीं आती है तेरे को? कभी नहीं. एंड मैंने पूछा था कौन था ये कपल जिन्होंने एक्चुअली क्या हुआ फादर. तो ऐसे ना ऐसे बोलता है लव यू टू. जैसे कोई तेरे को कॉल नहीं किया ब्लैक कॉल कभी लाइफ में. सॉरी, हम पहले से लड़की नहीं है और फेयर भी नहीं है. तो? जैसे तेरे को बहुत सारे आए थे ना. हाँ, I'm sure. तो क्या तेरा तो घर पे तो ऐसे जिंगल आते रहेंगे ना, बहुत सारे क्या calls हुआ? आते रहेंगे. नॉनसेंस. फोन लगते ही कि सबका नहीं, मेरी रेपुटेशन को खराब कर देगा तू आलतू बाबा. और नमस्कार, आपका हाथ साथ पैम पैम में, प्लीज उसको बोल दो कि इसका रेपुटेशन कहाँ पे. हेलो हेलो, हाय हेलो हाय पैम पैम, पैम कैसे हैं? अरे बढ़िया बढ़िया. क्या बढ़िया. इतना जल्दी से जल्दी क्यों बोल रहे हो? नहीं, हाँ तो बताइए ना, कहाँ से कॉल आई कर. थिंक इसमें आपके ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, अच्छा पहले आपका नाम बताइए. सुनीता ही हूँ. सुनीता जी. सुनीता जी. सॉरी सुनीता जी, क्या ना आपने जल्दी बात किया तो मैं सोचा क्या हुआ वहाँ पे. हाँ. लेकिन सुनीता जी बताओ, ये कपल, ये दिस इज नॉट ऐश्वर्या, नो दिस इज नॉट अभिषेक बच्चन, नो. ये इनका जोड़ी जो है ना, इन्होंने एक फिल्म बनाया. आफ्टर दे वर लाइक यू नो हार्डकोर कपल एंड एवरीथिंग, बट नाउ आफ्टर दे हैड अ वेरी बैड फाइट. इनका पहला जो मूवी बना, वो मूवी बनते टाइम पे दोनों की अफेयर हो गई. हाँ, हो गई. तो उस बंदे की दूसरी जो एक्चुअल स्टेडी गर्लफ्रेंड थी वो टूट गई. हाँ. I mean, मतलब यू नो कम्प्लीटली वो उसको छोड़ दिया रिलेशनशिप. उसने, हाँ, break उसको up कर छोड़ दिया. दिया. फिर ये दोनों एक हॉट आइटम बन गए. हाँ. एंड देन ये दोनों जब एक हॉट आइटम थे, इतना यहाँ तक पहुँच गया कि लोग कह रहे थे कि ये इन्होंने अपार्टमेंट ली थी इकट्ठे, फिर हाँ. शादी वादी करने वाले हैं, ये सब हुआ था. और फिर दोनों की पता नहीं क्या हुई, बट ब्रेकअप हो गई. एंड जब ब्रेकअप हो गई, इसके वो ब्रेकअप होने के टाइम पे इन्होंने शुरू कर दिया था एक मूवी, एक प्रोडक्शन. जो बहुत ही उसका, इस हीरो का फर्स्ट प्रोडक्शन वेंचर था. लेकिन वो इन दोनों के झगड़े की वजह से और कॉल शीट्स की वजह से 4 साल खिंच गया. और बहुत पैसा लुट गया इस प्रोडक्शन में. एंड इस हीरो ने पूरा ब्लेम डायरेक्टर पे डाल दिया कि डायरेक्टर का लाइफ खराब हो गया. हाँ. तो बोल दिया, और अभी डायरेक्टर को रियलिटी शोज करने पड़ रहे हैं.
मेरे को तो सिर्फ कपल के हिसाब से पहले वही समझ में आ रहा था, बट हाँ। बाकी ये तो बहुत लंबी स्टोरी हो गई। हाँ नहीं यही सोचो, ये कपल जो है ना, ये जो बंदा है, बंदा वेरी क्यूट है, फाल्तोनी का फेवरेट है, और बंदी जो है मेरा फेवरेट है, मेरी फेवरेट थी। हाँ, हाँ वो भी काफी क्यूट है एक जमाने में। क्या अभी तो उसका वो हाँ, क्या अभी प्लास्टिक वो- सर्जरी होके उसका नाक ऐसा कर दिया, उसका चीक ऐसा हो गया। हाँ, she fixed her nose, हाँ, और फिर वो अभी तो cheek बहुत खराब implants दिख रही है, लगा दिया, हाँ। पता है क्या कर दिया। I don't know. Actually, She she was shouldn't very have gone pretty to the as knife. is. Yeah, she was pretty that हाँ। time before that, यार। पता लगा कौन है? सलमान खान से टाका बिड़ा है, सोचो। हाँ, सलमान खान से टाका बेटा है ये Yes. तो। यस यस। हम्म, अरे सलू ये में, कौन- हाँ सलू में का आज का करंट वही है, मतलब फॉल बैक का ऑप्शन बी है वो, ऑप्शन बी नहीं है। बिकॉज एज लूलिया वांटूर, राइट, व्हाट her name is. Option B is this one, We no? don't know, right? Like Salman Khan, I think he's not going to marry a Desi, he's going to marry a non-Desi only. No, apparently Salman Khan's got Lulia Vantoor, Jacqueline तो Fernandez, इससे वन everybody पर्सन there. अरबाज खान मिला हुआ है क्या? अरबाज खान की कोई बीवी के साथ में ना, तो ना, ना, नहीं ना, कितनी वो अलग है, नहीं। वो उसके बारे में बाद में वो बात करेंगे। झगड़ा अलग है, वो वो आएंगे हम अलग, लोग। वो आएंगे। वो आएंगे। लेकिन ये तो बताओ, ये सलमान खान के साथ कौन कौन बिड़ा, बताओ अभी तो देखो। हाँ एक कटरीना मिनट। कैफ के साथ हाँ हाँ हाँ, यू गॉट इट, ओके। कतरीना कैफ के साथ कौन से बॉयफ्रेंड के साथ था उसका टाका, जो अभी आलिया भट्ट के पीछे घूम रहा है? आलिया भट्ट के पीछे तो अपना रणबीर घूम रहा है। हाँ तो हाँ। हाँ तो कनेक्ट डॉट्स। तो रणबीर और कैटरीना देखा, मालूम नहीं था आपको ना? देखो यार, किसी को मालूम नहीं था यार, ये सब हो रहा है। नहीं, उनका इबीजा ये तो वाला। वो भी, ये कैसे हो सकता है? हाँ देखो, हाँ What? सच्ची में? इनका 4 साल का अफेयर चला, पूरा फुल फ्लेज्ड। उन्होंने अफेयर घर तो चला, लेकिन हमने मूवी भी बनाया, वो भी फ्लॉप किया। हाँ, जग्गा जासूस जग्गा करके, जासूस, एक बहुत अच्छा मूवी है, बहुत अच्छे गाने हैं वेरी उसमें, नाइस कॉन्सेप्ट। वेरी गुड कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन पूरा सत्यानाश कर दिया दोनों ने, क्या? वो क्योंकि कटी पार्टी वाली थी क्या? कौन सी वाला बताओ? कौन ये सी? नहीं वो जग्गा जासूस बोल के एक फिल्म था जहाँ पे बहुत म्यूजिकल था। जासूस, क्या? हाँ, हाँ, यही वो उम्र वाला। है कर Yeah, ले that's the one. गलती से मिस्टेक, वो वाला। वो वाला। हाँ, that one, not the कटी पार्टी, जग्गा जासूस। Yes, Yes, you're yes. right, that one. कटी बट्टी, इमरान खान एंड कंगना रनौत, yeah. oh that is another one और altogether. सच्ची में आपसे बात कर करके मेरी सारी बॉलीवुड की न्यूज जो है ना माइंड में टच हो जाएगी धीरे धीरे। हाँ, इसी हम लोग वही करते हैं, हम लोग हमारा काम है आपके दिमाग में सो करना। Yeah, Yeah. yeah. ना, मतलब not like sleep in your mind, I'm talking about so in your English वाला so the seeds of all this tinsel down there. But thank you so much इंद्र जी, आपने कॉल किया। आप बेदखल कॉल करो, मतलब बेहिचक कॉल करो। बेझिझक। बेदखल नहीं, बेझिझक। हाँ बेझिझक, सॉरी मेरा इतना उर्दू का स्ट्रॉन्ग नहीं है। हाँ, हो जाएगी थोड़ी देर आपसे बात करते करते, हम लोग यहाँ से हाँ। तकल्लुफ कर लेंगे। Exactly. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग Thank you अस। so much. Thank you so much for calling in. Have a good one. देखा फादरी, हाँ। people didn't know about that. रणबीर कटीना का बहुत ही बड़ा गंदा ब्रेकअप हुआ बंजान, Yeah. in the sense that I don't think they still talk to each other. अच्छा, I don't know. Do you know? I don't know. Well, if you didn't know about that, Ranbir Kapoor is on Facebook, but he's on a Gupta ID. Only Fake. Faltari knows about it. Yeah, he's on a fake ID बंजान on Facebook. लेकिन कटरीना कैफ के साथ जो ब्रेकअप हुआ, oh, it wasn't a bad movie, Deepa. Come on, it's a good movie. Actually, watch the movie. We watch it on the big नहीं, screen. it's okay. Deepa, slowly upgrade a taste, okay? हमरी चुराई ले निंदिया, हम पे किराई के हाय रे टूटी जुरिया, हमसे चुराई ले हमका। पहाड़ों में तू है, नजारों में तू है, देखूं जिधर मैं वहाँ तू दिखाई दे। प्रेम की नैया है राम के भरोसे, अपनी फादर ने एक बंदा याद आता है मुझे, हाँ, टोटल नो नॉनसेंस बंदा है, हाँ, अच्छा बंदा है, सिंसियर बंदा है, मतलब so far that's what you see it is. हाँ, एक पत्नी रहता है एकदम almost, I believe, I don't know how far it's true. हाँ, Supposedly before the marriage and after marriage, supposedly there's some here and there affairs and everything, but actually बहुत decent है. लेकिन उसका तो यार, उसका सही में anger is there with शाहरुख खान. क्या? हाँ, यहाँ तक कि बीवी ने शाहरुख खान और करण हाँ, जौहर, हाँ, 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 जिस बंदे के बारे में तू बात कर रहा है, उसके बहुत सारे अफेयर्स थे। हाँ चलेगा, लेकिन उसका तो बहुत सारे उसका तो affairs टिफ है ना, उसका तो स्टैंडिंग टिफ है विद शाहरुख खान एंड करण जौहर. यहाँ हाँ. तक कि बीवी ने बोल दिया, करण जौहर जो बेस्ट फ्रेंड है उसको बोल दिया कि नहीं यार, आई डोंट वांट टू बी विद यू एनीमोर, बट आई डोंट वांट टू कम इनटू एनी ऑफ योर प्रोग्राम्स. हाँ, ऐसा बहुत है. कौन है बंदा? कौन है बंदा जो उसका, ही इज मैरिड टू वेरी पॉपुलर हीरोइन आल्सो. बहुत गरजते हैं वो।
नैया को पार तू लगा ही दे, प्रेम की नैया है राम के भरोसे, अपनी ई नैया को पार तू लगा ही दे। अरे ये गाना long time I played the song, but anyway I played it off double jump for you guys. What there was a nice song called उल्लू का पट्टा. हाँ, तेरे बारे में क्यों गाना गाऊं? अब ते क्या? मेरे बारे में? Okay, fine, मेरे बारे में, fine, okay. Go, Fine, man. happy. Hi तो चलो. Vijaya, nice to see you joining us on Facebook. Sridhar sir, nice to see you too. Abhay, तू log in किया रे? Very nice to What see is you. that? क्या? Abhay. Oh my हमारे God. बंधु. Very nice to see you. थोड़ा Madhu. बहुत अल्प प्राण महाप्राण में डिफरेंस हो गया तो बहुत रिस्पेक्टफुल हो जाएगा इस बात में। पहले बजल आप कॉल कीजिएगा, कौन था ये बंदा जो कितना गुस्सा है शाहरुख खान पे कि शाहरुख खान के साथ बात नहीं करता, they don't share screen, they don't share stage, right? यहाँ तक कि उसको बीवी को बोल दिया कि don't फ्रेंडशिप मत करो। क्या nonsense है? हाँ Seriously? उसे बीवी ने बोल दिया ना, don't disrespect my husband बोल देना। वो डेट्स की वजह से हुआ। कुछ नहीं। डेट्स की वजह से, रिलीज डेट्स की वजह से। हेलो। Well, okay, इसका कजिन ब्रदर जो है रोहित शेट्टी likes शाहरुख खान anyways. क्या? दिल उल्लू का पट्टा है, थोड़ी तकदीर क्यों आजमाता है। नंबर कॉल है 4089122479। कौन है भाई? ये फादर ने हिंट दे दिया कि वो गरजते हैं। वहीं जाता है, दिल उल्लू का पट्टा है, थोड़ी तकदीर क्यों आजमाता है, दिल उल्लू का पट्टा है। का चिट्टा है, ओ जाना ना हो जहाँ वहीं जाता है, दिल उल्लू का पट्टा है। And yes, बंदजान, अगर आपको मालूम है तो फादर नहीं, तेरे को मालूम है कौन था ये? मेरे को मालूम है। एवरीबॉडी को मालूम है आलतू बाबा। Everybody को नहीं मालूम है। I'll tell you why. क्योंकि इस आदमी की जो बीवी है, हाँ? ये जो इस एक्टर के साथ एक्ट किया है, वो इन दोनों की जोड़ी ऑन स्क्रीन सपोज्ड टू बी द मोस्ट आइकॉनिक जोड़ी, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक जोड़ीज ऑफ रीसेंट टाइम्स। ऐसा कोई और जोड़ी नहीं निकला जो जैसे इन दोनों की जोड़ी थी, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो जलन होगा ना। अरे that is not fair यार, that is not fair। ऐसे बोल रही जैसे कि now also Jaya Badri having an issue with Rekha Amitabh Bachchan। I'm pretty sure she would have that issue even today। अरे कौन सी बीवी को पसंद होगा कि बार बार उसको याद आए कि उसके पति ने उसको मतलब किसी और के साथ चक्कर चलाया था यार। अरे come on यार, should be leave bygones as bygones। या very easy to say, be quiet। तू बोल रहा है स्कॉर्पियो? तू बोलता है स्कॉर्पियो, मतलब क्या? अच्छा मीनाक्षी जी, हाँ। क्या पाप क्या यार, आप कॉल नहीं कर रहे हो? क्या पाप किया? किसने पाप हाँ, किया? वहाँ पे फेसबुक पे लगा रही है लोग, दीपा, मीनाक्षी। फोनोफोबिया वहां तक पहुंच गया। हाँ। My God, बंदजान। हाँ। Okay. Urmil said that he was the person who called up but didn't talk to us। क्या Urmil भाई? उर्मिल why you didn't call? Why didn't you talk? होले what यार, हम तो seriously? डर गए, अभी हालवे के टाइम आ गया, क्या मालूम? क्यों? क्या somebody calling with the hockey mask? Yeah. Who was wearing a hockey mask? What if somebody calls up wearing a hockey mask? What do you go? Who cares? I know what you did last summer. You'd be like, I did a lot of things. Which one are you talking about? I would say send me videos, please. Or I would say post it on Twitter and tag me. Yeah. Really? Yeah, why not? Really? Yeah. Yeah, half of those things will be eating samosas here, eating vada pav there, eating dhokla here, eating chole bhature there. Most of those videos will be just that. Excuse me. Ha. And then sleeping and snoring. Yes. Yeah. So please post it if you have some videos that way of me. Lekin Faltani, today Tinseltown tips, actually there's so many tips out there in the industry. Dude, I'm telling you, man. एक से बढ़कर एक tip, and abhi tak people are not able to tell you who's the person who actually has this unspoken war with Shah Rukh Khan. Yes. I don't think it's because of release dates, Faltani. I think it's something to do with something like, I believe Shah Rukh Khan kind of, disrespected him in front of his wife. What? Correct, and the wife took offense to it, and wife jumped to the defense of this person. Uh-huh.
and that's how they decided never to actually work in his production. What? And though they are very good friends, like the wife and Shah Rukh Khan and what's the guy's name? Yeah, Who has the you know Coffee Karan guy. Huh. They're all very good friends. Huh. Because of this particular husband not liking that, the wife had to step away from the friendship. What nonsense. What nonsense. In fact, the husband and wife came on Coffee with Karan. Oh, really? They came on Coffee with Karan and Oh. they even promised that they would make a movie together. What? What? Oh, you make it seem like as though whatever happens in Coffee with Karan is like, it's all staged, dude. Yeah. It's all right. staged. I know how much they would have got paid for it. Well, Karan actually asked him the question. People say that there's this big tiff that we have and all that Yeah, stuff. yeah. He asked him and he said, I don't know what you're talking about. People write all kinds Ha, of ha, 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 ha. What did he say? Uh-huh. I don't know what you're talking about, right? Yeah, yeah. मतलब क्या है? He said, but on screen नहीं बताएंगे. But he said one thing. He said, you haven't offered me a movie, Karan. That's why. Why is Yeah. that he's not offered a movie for him? Because Yeah. Actually, even Akshay Kumar when he came on, because Karan's first crush in his life was Twinkle Akshay Kumar? Oh, Twinkle sorry. Khanna, right? Twinkle Khanna. And so when these two went on the show, Akshay Kumar said, well, you've not offered me a movie. Huh? So then after that, they did the good news, right? They didn't even offer a movie for. Oh, you're saying that now they'll offer a movie for this guy also? I think so. I don't know if he did any Dharma production, but one thing that I do know is there was a huge issue when Dharma Productions got involved with Bahubali release date and I think Shivai release date or whatever. Something, there was a clash. No. At that Shivai time. came afterwards, right? Shivai didn't clash with No, Bahubali, there was some movie of his. I don't know which one, but they clashed big time. And then there was another movie. There was another movie which clashed. The release dates clashed with this guy's release. I dates. think the release date and all is just like, it's in the air. Nobody knows about नहीं it. because वो कुछ screens number of screens that it'll open on and all that makes a difference apparently. Oh, yeah. First Bakras will come into the theatre. Yeah, something it'll open on 280 screens. Blah Yeah. blah blah. Like that they have some. Yeah. Something. We had done a box office review for you guys some time ago. We're going to bring it back. Actually, we do it generally on the first part of the year, end of the year kind of a thing. Right. Probably this year we'll do it for you guys just to understand how it works. Because there used to be a time when the movie used to run for so many weeks and it's be successful. Yeah. Now there's so much of lack of patience in the audience. They don't want to go back again to a movie or whatever. Yeah. And the first weekend is when it decides if the movie is success or not. Correct. Weekend collections actually decide whether the movie is success. The whole thing is marketed in such a way that instantaneous they should get the money and finish it. Correct. They'll not wait for next week. But you know what? We also learned that a lot of these movies, the way it works nowadays, is that the movie makes money even before it hits the theatre. That's even more good. Because the OTT rights जो भी है उसमें ही पैसा बना लेते हैं. Yeah, Endorsement rights, promotional rights, ये सब देके मतलब they actually. And I give credit to Saif Ali Khan for actually doing that. Was it Saif Ali Khan or Yeah, was it Shah Rukh? no, Saif Ali Khan, because Saif Ali Khan nobody took his movies in theaters, right? Oh. They boycotted him. Namaskar, आपका हार्दिक स्वागत है Pam Pam में. Who's this? Hello? Hello, Pam Pam. Ah, Deepa. दीपा. Mountain House. हाँ कैसा? हाँ. पहाड़ियों से बोल रही हूँ. हाँ बोलो. कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक? आप लोग हाँ ठीक हो. हाँ. और ये क्या मतलब टॉपिक अच्छा है वो आज का. आज का वाह thank you for qualifying आज का देखो I'll tell you one thing Deepa you have to upgrade your taste in movies by the way Why man? yeah Why आज का क्यों? she said like first of all she said that particular movie of that musical अरे इतनी बार कॉल करती हूँ और बोलती हूँ हर टाइम अच्छा है. अरे बाबा मतलब आज का ये थोड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग है. तो everybody has their opinions on the Jodi, right? हाँ तो tell us who's the Jodi let's ask if she knows who's the Jodi we're talking about. अरे नहीं अभी तो आप लोग you guys were all over the place. मुझे पता नहीं चला कौन सा जोड़ी की बात हो रही. अक्षय कुमार बोला गया, शाहरुख खान प्रियंका बोला गया. वो जोड़ी के बारे में हमने उस जोड़ी का नाम हमने नहीं लिया अभी तक. हाँ. We said that this particular जोड़ी जोड़ी बोले तो this two heroes इन दोनों के बीच major टक्कर है. And Karan Johar is also involved in the mix. जहाँ पे एक हीरो के जो बीवी है वो एक्चुअली वो भी इन्वॉल्व है इन द मिक्स बिकॉज वो बहुत अच्छी दोस्त है जो करण जौहर की और शाहरुख खान की. इनफैक्ट शाहरुख खान के साथ उसका आइकॉनिक जोड़ी था. That is Ajay Devgan. And Ajay Devgan and हाँ ऐसा बोलो ना. Why don't you give credit to the girls? Yeah, come on. What is this? अरे नहीं मुझे लगा
सी मुझे लगा तुम लोग जो जोड़ी ना बन पाई उनके बारे में बात ना देखा वही ना क्लैरिटी से सुनो हम बोल रहे हैं कि ये टिप है क्लैरिटी clarity मतलब see initially started off with people 1:1 fights हाँ now we came into the point of girl female fights and now jodi fights हाँ now the whole jodi together are fighting against नहीं them वो तो कब से शुरू हुआ लाइक इन द बिग शिवाय दैट फालतू रानी ने जो बोला हाँ शिवाय एंड ये दिल है मुश्किल दिल है दोनों एक मुश्किल, साथ हाँ। एक ही दिन रिलीज हुए correct correct एक ही दिन रिलीज हुए हाँ। एंड पहले ही अजय देवगन ने अपना डेट सुनाया था uh-huh. हाँ something there was something and then Dharma production booked more screens Yeah. and he paid more and got the extra screens which were already pre-booked by Shivaya yeah हाँ and that's when the tussle started. तो और उसके बाद ये करण ने एक और गलती की वो उसने अपना बुक रिलीज किया और उसमें कुछ बोल दिया अगेंस्ट काजोल देखा Oh. पागल आई मीन या इट्स लाइक वंस यू राइट इट यू कांट एरेज इट ना तो वो बाद में उसने एडमिट भी किया कि आई कांट अनडू व्हाट आई डिड एंड आई एम सॉरी अबाउट दैट हम लोग वी आर गोइंग थ्रू द बैड फेज क्योंकि वो दोनों क्लोज फ्रेंड्स हैं correct he said certain mean things about her. Yeah, oh he really did. He did. Yeah, So mean. yeah. Yeah, he did. That she never stood up for him. That when Ajay Devgan was disrespectful towards him, it is not the other way around. uh-huh. Apparently, as a friend, even like you know, Kajol should have stood up for him as a friend and said that this should not have happened. बट बाद में पता इट वाज ऑल बिग मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब ऐसे ही बोलेंगे ना वो लोग हाँ। पता नहीं क्या चलता है इन लोगों के बीच आई मीन इट्स लाइक मोर ऑफ अ पॉलिटिक्स ना I देयर इज know. नो Politics फ्रेंड और and नो drugs. एनिमी इन दिस इंडस्ट्री yeah politics and drugs god knows what kind of drug party that goes on actually for Yeah. right that kind of stuff also नहीं मैं बोल रही हूँ ये इंडस्ट्री में भी देयर इज नो एनिमी देयर इज नो फ्रेंड लाइक फॉर लॉन्ग टर्म but don't worry वो Deepa नहीं I'm हो always सकता। we always your bandhu Deepa Yes, Deepa. हाँ हाँ Me दोस्त too, me दोस्त too. ना रहा तो क्या हुआ बंधु Yeah. ही रहा. we are your gerwa Yeah, that's right. So, हाँ. thank you, Deepa, कि आपने सही से पहचाना. It is Ajay and Shahrukh का and Karan Johar and Kajol. The Yeah. whole एंड mix. शाहरुख खान एंड करण जौहर का भी झगड़ा हुआ हाँ वो बाद में बात करेंगे आज के लिए टॉपिक नहीं है so coming to the close of the show Deepa thank you so much you're going to be the last caller for the evening but thank you so much for calling us please Thank you so much for calling in and sharing this, Deepa. We look forward to talking to you again tomorrow right here on the show. तब तक के लिए stay safe, stay happy. Thank you so much for calling in. and of course everybody stay hungry for sure because you got to fast always Huh? it's better to be hungry before you eat What? don't eat without being hungry All right, Balchad. Good night. शबा खैर And a प्यार भरा. जम गया तो तेरा कुल्फी जम गया दुनिया भुला के तुमसे मिला हूँ निकली है दिल से ये दुआ रंग दे तुम है गेरुआ